So in yesterday's class, we discussed this concept. Okay. ये याद है ना? क्वेश्चन याद है? हमने कहा था कि भाई we throw a ball upward, we launch the ball upward with an initial speed of 12 meter per second. It reaches a max height of 36 meters. Okay. How long will the ball takes to land? Okay. कोई क्वेश्चन समझ में आता है? कल कल वाला क्वेश्चन दोबारा से मैंने कराना है दूसरे तरीके से. ओके. क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है आपको? एक सेकंड. ओके. अच्छा, अब देखो हमने हमने इसका एक तरीका तो ये निकाल लिया था कि भाई इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय स्प्लिटिंग द मोशन इनटू टू, राइट, के वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, सो वी मेजर द टाइम, वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर दैट एंड वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय टू टू गेट द टोटल टाइम पीरियड, राइट. हमने ये तो इसको सॉल्व कर लिए थे इस तरीके से, राइट. बट वी हैव रादर simple way of doing this question, okay, and that is by using the quadratic formula, right. ऐसे quadratic formula in term of t, okay. तो उसके उसके थ्रू हम कैसे करेंगे? जैसे ये वाला, जैसे हमने आपने कहा था ना कि ये वाले इक्वेशन हम पिक करेंगे, सो why can't we solve it, or why can't we able to solve it, right? So for this equation to be useful, हमें सबसे पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी. सही, जरा प्लीज गौर से सुनना. डू यू हैव मैथ्स इन योर एएस, अहमद? जी जी। बस सेट है फिर काम हो जाएगा अपना. अच्छा जी, अब देखो. So we have the similar question. अब इसके अंदर हम अप्लाई करें ये चीजें, right? We end up getting the answer of 2.44, right? And हम हमें इससे भी आंसर आएगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा तरीके से लगाना होगा. ओके. अच्छा, in this equation, the s over here represents the displacement. Okay. सही हो गया. So s is, यार come on. So s is the displacement. Okay. S is going to be displacement, right? अच्छा. And displacement means कि if like you have to subtract the initial and final distances जो भी आपके पास है, right? So हमें सबसे पहले इसके अंदर ये figure out करना होगा कि इसके अंदर displacement है क्या, because 36 is not going to be the displacement, right? अच्छा, now if you draw the motion, so the ball is right here, okay, and it's moving up, reaching the max height, take U-turn, okay, and then get back, okay, to the same point where it started, okay. So अगर मैं आपसे पूछूं अहमद कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, व्हाट विल यू से? हाउ, व्हाट यू से डिस्प्लेसमेंट के बाद? जीरो। जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट. So displacement is going to be zero, right? But this height that the ball reach, जिसको हमने कहा maximum height, वो हमारे पास है 36, okay. So 36 is not the displacement, it is the distance, okay? Or it is just the height. It is not the distance, it is not the displacement, okay? It is just the height, the maximum height that the ball ever reached, okay? Now, if you're using this equation, you have to put displacement in s, right? Be very careful. अच्छा जी, so यहाँ पे हमारे पास इस equation के अंदर displacement zero है, right? So जब आप इसके अंदर रखोगे, so s is equals to ut plus half at square, right? And in S, you have to put 0 for the displacement. U is going to be 12. T is unknown, plus half. Half A is going to be negative 9.81 because you're moving up. Okay. And T squared, right? So now you can see that it is a quadratic equation in terms of T, right? एंड आप इसको सॉल्व कर लोगे, सो 9.81 डिवाइड बाय 2 करोगे, सो 4.905. Okay, t square. I'm taking the negative term to the other side to make the t square positive. Okay, and then negative 12t equals to 0. Is that clear? या। Yep. Okay, now you can take t common. Okay, and you'll be left with 4.905 t minus 12 equals to 0. So you'll have two answers. One is going to be t0 and the other is going to be t. Okay, the other is going to be 4.905 t minus 12 is equals to 0, right? And t then going to be 12 divided by 4.905. Okay, and then please divide that. आंसर बताओ कितना आता है?
2.446. 2.446. is okay, 2.44, right? I'm not rounding off for now, but उसकी वजह ये है कि you can see that we have the two answers, they are similar, right? Right, कल वाला क्वेश्चन और आज जी. वाला क्वेश्चन, right? पहले तो ये बात हो गई, इज दैट क्लियर? सही। Yes. पहली चीज, दूसरी चीज, देखो, you know that okay, whenever you use a quadratic equation, so since it is a quadratic equation, it will always give you two answers, right? If you use a cubic equation, it will always going to give three answers, right? So the power corresponds to the number of answers, right? In the equation world. Okay, so if you have the quadratic equation, you will always going to have two आंसर्स, राइट? सो अब ये दो आंसर आपको क्या बता रहे हैं, लाइक ये जो दो टाइम की वैल्यूज हैं, द फर्स्ट टाइम वैल्यू इज टी जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एंड द सेकंड टाइम वैल्यू इज टी इज इक्वल टू 2.4, right? So these two time values are basically referring you that or referring you the 2 points where the displacement is zero, right? समझ रहा भाई? देखो, जी जी. डिस्प्लेसमेंट जीरो कहाँ पे है? एक डिस्प्लेसमेंट जीरो यहाँ पे, okay? In the beginning the displacement was zero, right? In the beginning, and in the end the displacement was zero again, right? So whenever you use this quadratic equation, so it will always going to give you two answer. One refers you the point where the displacement is what you have considered in s, okay? And in the other answer, it will give you um it will give you the time of the whole journey, right? क्लियर हो गया भाई? जी. ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सो आई हैव दिस अनदर क्वेश्चन फॉर यू. ओके, लेट्स से कि अच्छा, बाय द वे, always keep in mind, if they mention you the time, then it won't be a problem, right? Like अगर तो टाइम नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, ओके? कि आपको उसको किस तरह से निकालना है, ओके? सो ओके, द cannonball is fired, okay, with the speed of um 30 meter per second, okay? And it reaches the max height of let's say some value. um Let me give you the value. So 30 is 0 or 9.81, so divided by 2 into 9.81. So yeah, so height of 46 meters. 46 meters, okay? Now I'm asking you to find the total time, right? The cannonball remain in the air. Okay, can you solve? Okay.
अच्छा जी, क्या बना? डन। जस्ट वन मिनट। अच्छा, यहाँ इनिशियल स्पीड 30 होगी, राइट? यस। अच्छा जनाब। सो ओके, इफ यू यूजिंग यू कैन यूज टू थिंग्स, राइट? हैव यू डन? क्या हम शुरू करें या फिर अभी रुक रहे हो? या डन। ओके, हाउ मच? क्या है पेज, वो क्या है? जी 25। 25, ओके। सही, चलो देखते हैं, हाउ सॉल्व करते हैं। अम, अच्छा जी। सो एस इज इक्वल टू यू टी half a t square, right? So since the initial position and the final position are the same, right? The initial and the final position are the same, right? Because the point you have from where you started, you are landing at the same point, right? So इस वजह से you have to consider the displacement zero, okay? Height is 46, but the displacement is not going to be 46, okay? So just put s is equals to 0, right? And u is going to be 30, okay? And t is something that you're interested in, minus 1 over 2 into 9.81 and t squared, right? So it's still going to be, अच्छा, वन थिंग। जी बोलिए। जी। um, मेरे पास आंसर 6.116 आ रहा है, सॉरी। 6.116, ओके, लेट मी ट्राई एज वेल। अच्छा जी, वैसे आप अगर आप इसको कॉमन ले लो, सो एक तो आपके पास आ जाएगा t equals to 0, राइट? अब मैं पूरी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग डायरेक्ट, ओके? एंड द अदर वुड बी 30 divided by 4.905, okay? So yep, it should be, 6.116। yep. So 6.116 means 6.12 ले लेते हैं, 6.12 seconds, okay? Is that clear? या। So this is how you can use this sort of equation, right? Acha. And the first t equals to zero, ये क्या बता रहा है आपको? This is the first time where the displacement is zero, right? And this is the second time where the displacement is zero, right? Is that clear? ओके, फाइन। Okay. Now let's try another motion. अच्छा जी. So now अगर मेरे पास है, so if let's say I'm launching the ball from this point, okay? And let's say इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सही है, ये आ गई, okay? And it follow this path, say it follow this path, okay? And it lands right here, it land right here, okay? अब ये थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा ये सिनेरियो, सही है? And let's say you have launched this with the initial velocity of 25 ms minus 1, okay? And this distance is, let's say, this distance is, let's say, 100, okay? So okay, and the ball initially going upward, okay, and going downward, okay? So now you have to find the total time of the journey. Find the ओके।
total time of the flight. अरे यार ये आई आना चाहिए भाई तुम्हारा फ्लाइट ओके। अच्छा जी जस्ट टेक योर टाइम एंड एक दो मिनट में फिर हम करते हैं मिलके। अच्छा जी। अच्छा, just one question. Do I consider S to be minus 100? यस क्योंकि यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट Okay, डायरेक्शन। fine. Okay. यस डन। Just one moment. ओके 2.63 आ रहा है। ठीक जी एक सेकंड देना मुझे भी। जी जनाब। Yes, done, but quadratic equation के आगे नहीं हो पा रहा. ओके अच्छा जी मुझे जो है 9.8 डिवाइड बाई 2 और अच्छा जनाब अब आ जाओ अगर हम देखें तो सही है। सो जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो हो जाएगी 100 सही है। तो एंड मैंने 100 को नेगेटिव में लेना है सही है क्योंकि सिंस वी आर मूविंग अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन राइट। अच्छा जी एक बात हो गई। Okay. इनिशियल वेलोसिटी इज 25 एंड द एक्सीलरेशन इज 9.81 राइट।
negative 9.81, right? Yeah. Because we are still moving against the gravity, right? So S is equals to ut plus half at square, right? डू यू हैव मोबाइल? कौन सा मोबाइल है? एप्पल है या फिर वो है सैमसंग। सैमसंग? ये तो एक काम करो, अरे भाई, just download this calculator. It has a lot of function. Let me send you the picture. And ये प्ले स्टोर जाओ और ये वाला कैलकुलेटर उठा लो, सही अच्छा कैलकुलेटर है। इसका नाम जो है वो आपको मिल जाएगा, एक सेकंड, इसका नाम भी मैं आपको बता दूँ, सही है। इसका अच्छा नाम क्या है? वो, हम्म। जस्ट वन थिंग कि आप मैसेज करें ना तो आप जो दूसरा नंबर भेजे थे ना उसमें हम्म। मैसेज करें। ओके ओके भाई। अरे यार वो दूसरा नंबर, अरे हाँ वो मुझे सेव करना था, भूल गया मैं। चलो डन हो गया। वो आपका नंबर है पर्सनल या फिर वो किसका नंबर है? मतलब मेरी अम्मी का नंबर है बट इट्स यूज्ड फॉर स्टडीज। ओके ओके। तो आपका कोई मोबाइल नहीं है? नहीं। अरे क्या बात हो गई यार, ये तो यार अस मोमेंट हो गया। अच्छा जी, क्यों भाई? हिल्स हो गया पूरा आपका? नहीं नहीं। कहाँ पे हो अभी? चल रहे, कर रहे हो ऑलमोस्ट नहीं लाइक कर रहे? हाफ वे। हाफ वे नहीं, मतलब? हाफ वे किया मैंने बस। हाँ फिर अभी अभी कर रहे हो मतलब सुबह लेसी के आसपास हो गए? नहीं मतलब हाफ वे करके स्टॉप। अच्छा कंटिन्यू नहीं। स्टॉप किया हुआ है तो वो नहीं करना, लाइक कंप्लीट करने का कोई सीन नहीं है? नॉट एटलीस्ट नॉट नाउ। क्यों? लाइक ड्यू टू लाइक लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन? या। ओके, सही। अच्छा जी, खैर। तो अच्छा खैर, तो मैंने वो भेजी, दोबारा से भेजूँ क्या? नहीं, आई गेट इट। मेरी मदर ने फॉरवर्ड कर दिया बट वो तो उसका नेक्स्ट टाइम से मैं नाम। भी ना, उसका नाम यार कैल, ये ऐसे ये कैल स्पेसिफिक साइंटिफिक कैलकुलेटर लिखोगे तो आ जाएगा। ओके। साइंटिफिक कैलकुलेटर प्लस 991। ओके ओके। ओके। अच्छा जी, सो वी हैव -100, सही है, is equals to, we have initial speed of 25, and since we are moving against the gravity, so 1/2 into 9.81 into t squared, right? And इसको अगर जो है हम इसको सॉल्व करें, सो 4.905 टी स्क्वायर, ओके, -25, ओके, टी एंड -100, ओके, इज इक्वल्स टू 0, राइट? कैलकुलेटर डाउनलोड हो गया? डाउनलोड हो रहा है। ओके। सो जब मैंने इसको सॉल्व किया, सो आई एम गेटिंग, अच्छा जी, -100 मेरे पास जो आ रहा है, आई एम गेटिंग वन आंसर एज टी इज इक्वल्स टू 7.73, ओके, एंड द अदर आंसर इज, यार पेन चार्ज खत्म नहीं हो रहा, एंड द अदर आंसर इज -2.63, ओके। ये दो आंसर मेरे पास आ रहे हैं। ओके। तो अच्छा, अब ये जो दो आंसर नहीं बता क्या रहे हैं, इनको रीड ऑफ कैसे करना है, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास जो 7.73 का जो आंसर आ रहा है, राइट, दैट इज बेसिकली रेफरिंग दिस मोशन। मैं इसको ना हाईलाइट करता हूँ, दैट इज रेफरिंग दिस मोशन, ओके। ये वाले मोशन को जो है ना 7.73 रेफर कर रहा है, ओके। एंड
अच्छा। जो रिमेनिंग मोशन है उसको जो है ना, ये वाला वो रेफर कर रहा है, टाइम। सही है। सो जो सेकंड टाइम है, दैट इज t इज इक्वल टू -2.26, आई थिंक यही है, 2.63, सॉरी, 2.63, वो नीचे वाले मोशन को रेफर कर रहे हैं। सही। सो जस्ट इग्नोर द नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा है यहाँ पे कि जो है ना, बिकॉज वी आर लाइक मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, तो इस वजह से वो नेगेटिव साइन वही शो कर रहा है। बट टाइम के साथ चूंकि नेगेटिव साइन नहीं होता, या टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जस्ट नीड टू ऐड द टू टाइम टू गेट द टोटल वन। ओके, 7.73, ओके, एंड प्लस 2.63, राइट? सो यू विल गेट द टोटल टाइम, एंड इससे आपके पास बन जाएगा, सो 336, 7 प्लस 6, 12, 13, एंड 9 and 10.36, ओके, क्लियर? या। ओके, अच्छा जनाब, कैन वी वेरीफाई इट विद समथिंग एल्स? क्या हम इसको किसी और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं? अच्छा, चलो लेट्स ट्राई टू वेरीफाई इट। क्योंकि ना मुझे इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं स्टिल। अच्छा, अगर मैं इसको ले लूँ, अगर मैं इसको यहाँ तक का मोशन कंसिडर करूँ, सही है। सो टिल दिस पॉइंट जो मेरे पास आ रहा होगा, टिल दिस पॉइंट मेरे पास जो आ रहा होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास है 25, सही है, एंड जो एक्सेलरेशन है मेरे पास है 9.81, सही है, एंड जो मैक्सिमम हाइट जो रीच हो रही है वो मेरे पास हो रही है, एट मैक्सिमम हाइट देयर विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ जीरो। ओके, सो टू फाइंड द टाइम पीरियड, सो टू फाइंड द टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट, मैं क्या कर सकता हूँ? a is equals to v minus u over t, I can use that, right? एंड t को अगर हम सब्जेक्ट बना दें, सो दैट वुड बी 0 माइनस 25 divided by -9.81, since we are moving against the gravity, right? So how much is the answer? 2.548। Okay, so we are getting 2.548, okay। अच्छा जी, अगर आप इसको अच्छा, ये 2.548 का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया, सही है। अच्छा, एंड इफ यू कंसिडर द सेम थिंग यहाँ तक, सही है। सो आपको पता है कि इफ यू लॉन्च द बॉल विद द सेम वेलोसिटी, सो अगर बॉल वापसी उसी लोकेशन पे पहुंचेगी, इट विल अगेन हैव द सेम वेलोसिटी, राइट? सो यहाँ पे बॉल की 25 की वेलोसिटी होगी, सही है। सो इफ वी टाइम्स इट बाई टू, ये जो हमारे पास टाइम आया, इफ वी टाइम्स इट बाई टू, विल गेट डबल द टाइम। सो वो हो जाएगा तकरीबन, कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट, 5.0। 5 पॉइंट, या 5.1 अगर राउंड करूंगा तो। नहीं नहीं नहीं, 2 3 एसएफ में बता दो, एटलीस्ट 2 डीबी में बता दो। अच्छा, 0968। ओके, 5.096 या 097 ले लेते हैं, सही है। सो ये मेरे पास आ गया, राइट? सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टाइम टिल दिस पॉइंट, राइट? अच्छा, और इस पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होने वाली है, क्योंकि इट रीच द सेम हाइट अगेन और सेम लेवल अगेन, सो उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड होगी, राइट? और वो क्यों होगी? बिकॉज वी डोंट हैव एनी एयर रेजिस्टेंस। सो वो जितना ऊपर गया है, जब वो वापसी उतना नीचे आएगा, सो इट विल अगेन हैव द सेम वेलोसिटी बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो नाउ वी हैव, अच्छा जी, सो ये तो हमारे पास एक पोर्शन हो गया। अब दूसरा पोर्शन क्या होगा कि अच्छा जी, अब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास हो गई है 100, सही है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास हो गई है 100, सॉरी 100 नहीं, 25, राइट? एंड एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 9.81 पॉजिटिव बिकॉज मूविंग डाउनवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 100, राइट? ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये 100 है, दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। अच्छा जी, सो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सो मेरे पास जो है, जब वो ये बनेगा, ये दो आंसर सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आएंगे देन इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक की होगी, सही है।
तो खैर लेट्स सी। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है ना इनिशियल और ये आ गया, हमें निकालना है टाइम, सही है। सो वी कैन यूज वो यूज कर लेते हैं, ये इसके अलावा कोई और आसान से नहीं यूज करें। अ, एस इक्वल्स टू यू बाकी टी ही सब लग में रही है। फाइनल वेलोसिटी है। हम्म। जी जी। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। एस 100 और अ, यू अच्छा, ट्वेंटी एक फाइव क्वेश्चन। बोलिए। एस को -100 नहीं लेंगे? अब इस केस में तो नहीं लेंगे ना, इस केस में तो हम जस्ट यहाँ से यहाँ तक की काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये, लेकिन जो है ना मैं इसको अगर मैं इस तरह से करूंगा मेरे पास एक प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं एक छोटा सा ना मैं ख्वारी कर रहा हूँ, रफ वर्क, यू टी प्लस हाफ ए डी, अगर मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालूँ, सही है। अगर तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो देन फाइन, अगर नहीं निकाल सकते इसका मतलब एक क्वेश्चन, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। सो टू ए मेरे पास है 9.81, एस जो है वो मेरे पास है 100, राइट। और ये हो जाएगा यहाँ पे ऐड 25 स्क्वायर, सही है, होल थिंग अंडर रूट, सही है। कितना बनता है? जस्ट 1 मिनट। 50.86। 50.86, सही है। और अगर हम इससे फिर टाइम निकालने की कोशिश करें, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव फाइनल वेलोसिटी, वी हैव द एक्सेलरेशन, सो 50.86 माइनस 25 -25 divided by whatever the 9.81 gives you the time, 2.636। 2.636, which is this time, okay. So 2.636 is verified, right, वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो आ रहा है, सही हो गया। ये बात तो क्लियर हो रही है कि ये वाली चीज तो हमारी आ रही है, सही है। बट वी आर गेटिंग दिस टाइम इनकरेक्ट, ये वाला जो टाइम है, वी आर गेटिंग दिस थिंग इनकरेक्ट, ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, बट ये वाली चीज सही आ रही है हमारे पास, ओके। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? -9.81, अब मे भी पॉसिबल कि फिर जो है ना मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया हुआ होगा उसमें कुछ गलती की भी होगी, बट लेट्स गो विद अ क्वेश्चन जो कि है ना इन्होंने उसके अंदर दिया हुआ है। सो ये मुझे वर्टिकल मोशन के अंदर ये जो है ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी इस्तेमाल होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, सही है। और बस ये एक चीज़ है जो कि मैथ्स और फिजिक्स की थोड़ी सी कॉमन है, तो एक सेकेंड, ए एस फिजिक्स काइनेमेटिक्स एंड वन डायमेंशनल मोशन, ओके। सो शेयरिंग अलाउ, अच्छा जी, आ जाओ। um, drop ice drop from the top of the fall from the rest and the air resistance one triangle this one, नहीं अब although this is a vertical motion question but it is not that one जो हम अभी कर रहे हैं, right, this is an easy one। अच्छा जी, इसको स्किप करते हैं। साइंस म्यूजियम फेदर वर्टिकली, देखो वो चीज जहाँ पे जो है ना लाइक वेयर ओनली द वन डायमेंशनल मोशन वर्क्स, और वेयर द मोशन ओनली हैपन इन वन डायरेक्शन, तो उसमें मसला नहीं है। जहाँ पे दो डायरेक्शन में हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है एंड देन कमिंग बैक, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं उसको जो है यहाँ से उसके क्वेश्चन ढूंढा हूँ। थ्रोन विद द वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड ऑन द मून द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। कैन यू ट्राई दिस वन प्लीज, दिस क्वेश्चन, और लेट्स ट्राई टुगेदर, आसान आसान से क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, ओके। सो इफ वी, कैन यू सी माई स्क्रीन, ये क्या दिख रहा है? वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट से वाली स्क्रीन स्विच नहीं कर सकते होगे, लेट मी स्विच माई स्क्रीन। अच्छा जी, एक सेकेंड।
copy and delete. Okay, so ये आ गया क्वेश्चन। सही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने जो स्पीड दी हुई है थ्रोन, वो आपके पास इनिशियल स्पीड दी हुई है 5.2 वर्टिकली अपवर्ड ऑन द मून। ओके, एंड ओके, व्हाट इज द टाइम टेकन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो। 0। जीरो, राइट। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, एंड एस हो गया जीरो, और u is going to be 5.2 and minus 1.2 divided into 1.62 because it's moving against the against the gravity and t squared, right? अच्छा जी, so just solve it. So one t is going to be 0 at the beginning, and the other t is going to be uh, uh, um 5.2 and divided by, ये हो जाएगा 0.5, मतलब आप इसको जो भी सिंप्लीफाई 1/2 इंटू 1.6 कर लो, 0.5 into 1.62, so it is 0.81. 0.81. How much? Okay, just one. Um, 6.41, 6.42. 6.42. 6.42, which is D. Okay. अब ये तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई है, सही है। अभी दूसरी चीज है यार, इसमें जो है ना, अगर मुझे ये कोई क्वेश्चन मिल जाए, यार मुझे ना इसका कोई प्लेनेट लॉन्च दिस रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन ही चाहिए ना। हॉट एयर बैग कांस्टेंट स्पीड ड्रॉप्स, नहीं इसके अंदर भी नहीं होगा। हर हैंड, मेरे पास जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, a rock surface project vertically upward with this, the rock rises in height above the surface, what is the acceleration of the free fall near the surface shown the foreign। ओके, एक क्वेश्चन मिल गया, लेट्स ट्राई दिस वन। स्टॉप, लेट मी टेक यू हेयर। ये वाला क्वेश्चन है, सही है। लेट्स ट्राई दिस वन। क्वेश्चन नंबर कौन सा एग्जैक्टली? ये जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर कर्सर दिख रहा है, ये वाला, मतलब जो है ना, क्वेश्चन नंबर अच्छा 7 अच्छा, या 7। 36। सही है, हाँ जी। ओके, अच्छा जनाब, आ जाए, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी टेक यू बैक टू द जूम शेयरिंग। अरे यार, चल जाना। ओके, पेस्ट। ओके, ये आ गया। नाउ अगर हम इसके अंदर देखें, स्टोर इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट दैट इज 12 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, सो दिस इज द सी लेवल, this is the sea level, okay, which is 12 meter above, okay, and it's thrown vertically upward, okay, so you have thrown this stone vertically upward, okay, and it lands in the sea, okay, and they have given you the time. So yeah, air resistance is negligible, initial speed is also not given, okay। नाउ अच्छा, इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ये कि इफ देव गिवन अस इनिशियल स्पीड, तो उससे हम कुछ कर सकते थे, बट अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, सही। सो खैर, लेट्स ट्राई कि अगर हम इनिशियल स्पीड नहीं है, एट विच स्पीड वाज स्टोन रिलीज व्हेन इट वाज थ्रोन, सही है। मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन है, अच्छा जी। सो एस हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, एंड इफ वी पुट 12, negative 12, okay, because we are moving against it, and u is going to be unknown and t is 3.4, right, plus
half into negative 9.81. Okay, and t is going to be कितना आ जाएगा 3.4 का स्क्वायर, राइट? तो जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना बन रहा है? नाइन पॉइंट एट ओके। वन डिवाइडेड, आई एम गेटिंग द, यस। अच्छा, जस्ट एक क्वेश्चन कि नेगेटिव पे बाद में कैंसिल आउट किस तरह होगा? ओए, नेगेटिव बस, यू जस्ट हैव टू मूव दिस होल थिंग टू द अदर साइड, तो वो ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यू हैव टू सब ये बेसिकली इस तरह से बन रहा होगा, व्हेन यू सॉल्व दिस होल थिंग, सो ये हो जाएगा 54 56 पॉइंट समथिंग बन रहा है, राइट? सो जस्ट जी ब्रिंग इट टू द अदर साइड, तो 56 पॉइंट समथिंग समथिंग माइनस 12 इज इक्वल्स टू u टाइम्स 3.4, राइट? जी जी। And then like when you subtract, you'll end up getting 44 point something something, and just divide that by 3.4, you'll get the answer, right? या So जी जी सही। basically यस, it आई एम is, आल्सो। yep, perfect. अच्छा, सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाने को इसलिए करवाया कि हमें ये समझ में आ जाए दैट वी डिड द थिंग्स करेक्ट। यहाँ पे जो हमारे पास 7.73 आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके, एंड दिस थिंग ओवर हियर इज इनकरेक्ट, ओके। सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हम, अगर हम लेट्स से, अगर हम इसकी जगह इनिशियल स्पीड ले लें, लेट्स से इफ वी जस्ट हाइड द टाइम, सही है, if we hide the time and if we take the initial speed as 13, so yeah, and if we try to solve the question, so we still have to take the initial speed, t, negative 12 still remains a displacement, okay, and minus 1 over 2 into 9.81 and t square, right? अच्छा जी, सो इफ वी ट्राई टू सॉल्व, सो अब यहाँ पे वी हैव टू यूज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। सो इट विल बी 9 पॉइंट, अच्छा, ये पहले अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, सो मैं इसको अगर यहाँ पे ले आता हूँ 4.905 t minus 13t minus 12 equals to 0. Okay. And if I put it in the quadratic formula in the calculator, 4.905 is equals to negative 13 is equals to negative 12. So I'm getting two time. Okay. Two times value. So yeah, one is 3.37. Okay. And the other is ओके। negative 0.72. Okay. 724. Now let's try to build up the concept. सही। अच्छा, the first time is basically the time for the whole journey. Okay, क्या भैया, ये बात थोड़ा गौर से समझना प्लीज। ये जो फर्स्ट वाला टाइम है 3.375, which is actually rounded off to 3.4, which is mentioned in the question, सही। So the first time is like the time of the whole journey, right? समझ रहे भाई? And जी जी। the second time 0.724 is going to be this time, okay, is going to be this time, clear? ओके फाइन, क्लियर। सही हो गया। अच्छा, now let's connect it with the previous question, okay? So in the previous question we got this thing 5.097, right? And this 5.097 is basically the time from this to this point, right? क्योंकि हमने यहां से यहां तक का टाइम निकाला था, देन वी टाइम्स इट बाय 2 to get दिस टाइम, राइट? सही है। And then या we did the separate working to find out the time from this point to the end, which is 2.636, right? When you add the two times, please add कर लो, कितना आता है? ओके। यू वांट मी टू ऐड व्हाट? Um, I want you to add these two times. अच्छा ओके फाइन।
7.733। ओके, 7.733 मैचेस। या। सही। एक चीज जो मैंने गलत बताई है वो ये चीज है कि ये जो पोर्शन, ये जो 7.733 आ रहा है, सही है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, 7.733 इज बेसिकली रेफरिंग दिस होल जर्नी टाइम। ओके, ओके। सही हो गया। एंड द सेकेंड आंसर, ओनली शो यू द टाइम फ्रॉम द मीन पोजिशन टिल द एंड। क्लियर? ओके ओके, फाइन। सो इसको जरा लिख लेते हैं ताकि याद भी रह जाए। सही। सो वी जी हैव, अच्छा, जस्ट एक क्वेश्चन और। बोलिए बोलिए। वो जो अबव वाले वर्जन दफे दोबारा दिखा सकते हैं? कौन सा वाला? ये वाला? नहीं नहीं, मतलब वही नीचे, मतलब मुझे एक वर्किंग देखनी थी। ये वाली वर्जन? जी, यहाँ आपने ऐड कर दिया था ना 7.73 प्लस टू जी पॉइंट जी। सिक्स थ्री नहीं तो क्या ये सिर्फ 7.73 होगा? नहीं नहीं, क्या मतलब 7.73 को हमने इन दोनों चीजों को ऐड किया? नो, मतलब वो तो समझ आ गया, बट हम्म। अब यहाँ आपने लिखा ना टी इज इक्वल्स टू 10.36 सेकेंड्स, राइट? नहीं नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ना फिर। दिस इज इनकरेक्ट। सही है। मतलब अब जो मैंने एक चीज ठीक। गलत बताई है वो ये चीज है कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो 7.73 इज दिस इज दैट टाइम, राइट? बट ऐसा नहीं है, राइट? 7.73 रेफर्स द होल जर्नी टाइम, राइट? ओके। या। And 2.26 2.63 is this time only, right? बस ये चीज थोड़ी सी करेक्ट कर लो, ये मुझसे गलती हो गई। ओके, ओके फाइन, सही हो ठीक गया। है। तो फिर और यहाँ जी जी बोलिए। यहाँ जो है फिर फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसके अंदर वुड आई राइट 7.73? 7.73 लिख दोगे? यस, सही हो गया। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, जी अगर वो आपसे कहता कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द सेम हाइट अगेन, मतलब यहां से आपने लॉन्च किया और वो यहाँ पे वापसी पहुंच जाए, तो उसके लिए आप क्या करते फिर? उसके लिए आप यू जस्ट नीड टू सो सब्ट्रैक्ट इट, राइट, फ्रॉम दिस वन। एक काम तो ये कर सकते थे, दूसरा काम यू जस्ट पुट डिस्प्लेसमेंट जीरो, राइट? उससे भी हो सकता था क्योंकि जब यहाँ पे पहुंचेगी तो अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, है ना? जी जी सो ये दो काम आप कर सकते हो, राइट? सेंस बन रहा है, मैथ्स की थोड़ी सी सेंस बनानी है बस। सही, जी जी। सही हो गया। यहाँ पे मुझे जो चीज बतानी है दैट इज के द फर्स्ट इन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन। ओके, आपको जो होगा फर्स्ट टाइम विल बी द टाइम ऑफ होल फ्लाइट। ओके, एंड हाँ, sorry, and second time will be the time um from the mean position, from the mean position till the end. Okay, come जी। on, till the end, right? Clear हो गया? या। बस ये चीज आपने याद रखनी है। सही हो गया। अच्छा जी, ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने सेकंड वर्किंग की है ना, उसके अंदर जब आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शायद, मतलब ये वाली इक्वेशन ना शायद प्रॉपर्ली काम ना कर सके, राइट? मतलब वो आप एंड में जाके फंस जाओगे, तो इसलिए आई आई जस्ट फाइंड आउट द अदर वे कि मैंने पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली एंड देन आई सॉल्व इट। ओके, बट अगर आप इस तरह से करते कि भाई 9.81 नेगेटिव रखते, सही है, एंड टी स्क्वायर करते, सही है, एंड जब आप इसको यहाँ पे ले आते 9.81 डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर्ड माइनस 30 माइनस 25t इज इक्वल्स और प्लस 100, प्लस 100
सही है, इज इक्वल टू जीरो। सो जब आप उससे सॉल्व करते हैं, सो यू एंड अप गेटिंग मैथ्स एरर और लाइक द आयोटा फॉर्म आंसर, राइट, इमेजिनरी आंसर। सो इस वजह से मैंने यहाँ से डिसकंटिन्यू करके आई जस्ट सॉल्व इट यूजिंग द अदर पार्ट। ओके, सही हो गया। बस ये इस वजह से जो है ना, थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट किया हुआ है, बट वो जो है ना जस्ट नेगेटिव साइन को बचाने के लिए, बस दैट्स इट। सही। सो ये मेरे पास आ ठीक गया। है। अच्छा जी। ओके। नाउ इसको थोड़ा सा सही अगर हम कर लें, खैर, तो ये हमारे पास वर्टिकल मोशन हो गया पूरा कंप्लीट। सही है। नाउ 50.86 माइनस 25, सही है, सो ओवर 9.81 एंड दिस गिव मी 2.636। ओके, ये आ गया मेरे पास। सही। सो सो ये मैंने आपको कर दिया। अच्छा जी, एंड हमने जो है ना इसके थ्रू भी हमने इस चीज़ को समझ लिया पूरा। और बस यहाँ पे अब हमारा वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन कंप्लीट हो चुका है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोबेबली गोइंग टू डिस्कस द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड देन अभी इस वीक में मुझे चैप्टर कंप्लीट करना था बट नहीं हुआ, कल भी शायद ना हो पाए। प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा आराम से इंशाल्लाह कल की क्लास में। एंड देन आई विल प्रोबेबली बी गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन मे बी, और सही है, ताकि जो है ना आपका कुछ होमवर्क वगैरह हो जाए। एंड प्रॉब्ली कल हम कोशिश करते हैं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एंड फिर हम इसको जो है ना आगे वो करेंगे। सही है, फिर उससे क्वेश्चन वगैरह मैं दे दूंगा। सही हो गया। सो बस, चलिए जी। ओके जनाब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।